Empty fields, parched lands. Countless stories of drought and despair. ஒன்னும் வருமானம் இல்லைன்னு ஏதாவது கை செலவுக்காக தொலைச்சிருக்கோம். தண்ணி கிடையாது சார், தண்ணி இல்ல. Crops drying up due to lack of water. There is not a single drop of water in Kaveri river up to the far area, and this is the real reason behind the plight of Tamil Nadu farmers. Unable to pay off the debt, farmers are committing suicides. Distraught and desperate, farmers across India join hands. In all over India, all farmers and Kisans are suffering. There is no profitable price for them. From their parched fields to the national capital, farmers readying for a battle for their survival. Hello and a warm welcome to Ground Report, the one-stop destination that gets you stories from the remote corners of the country. Our focus through this program is to get a reality check of the issues on the ground and also put the spotlight on that section of the society which remains largely deprived. Our today's focus is the distressed Indian farmer, and we take you to the southern part of India, that's Tamil Nadu, which is facing one of its severest droughts, resulting in a huge number of farmer suicides. Panchanan Mishra with the top story on Ground Report today. Miles and miles of parched barren land stretched up to several kilometers across the villages of Tamil Nadu. One of the worst droughts that has hit the state is now forcing farmers to end their lives. Lakshmi's husband, Periyanan, a resident of Karur district in the Kaveri Delta region, pledged her jewelry against a loan which he took to dig a borewell, only to find out that the borewell failed to yield water. Periyanan jumped into the well, ending his life, but left behind 3 children with an uncertain future. இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, காஞ்சி போச்சு. தண்ணி இல்லாமல் கேணியில் போர் போட்டோம், போர்லேயும் தண்ணி இல்லை. கேணி வெட்டி 2 திருப்பு போட்டோம் சார். 2 திருப்பு போட்டு அதுலேயும் தண்ணி இல்லை, கேணி வெட்டியும் தண்ணி இல்லை. ரொம்ப கடன் தொல்லை. ஊர்காட்டில் எல்லாம் கடனை வாங்கி செலவு பண்ணிவிட்டு கடன் கட்ட முடியல. கடன் கட்ட முடியாமல் உளுந்து இறந்துட்டாங்க. Enter another district of the Kaveri Delta region, Thanjavur. Savitri's husband could not bear the stress of the failed paddy crop and died of a sudden heart attack. Savitri has got a meager 3 lakh rupees from the government so far. 3 லட்ச ரூபா கொடுத்தாங்க அரசு. அது பிள்ளைங்களுக்கு பார்த்துக்கணும். கடன் கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தோம், அது கொஞ்சம் கொடுத்தேன் சார். இப்போ எனக்கு தகுந்த வேலை ஏதோ ஒன்று கொடுத்தா பிள்ளைங்களை பார்த்துக்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். Government reports say 82 farmer deaths have been registered, but the farmers allege that some 400 farmers have committed suicide in this part of Tamil Nadu. The compensation amount stipulated by the state government for farmer suicides is 3 lakh rupees, but farmers say that the amount is meager and they are demanding a loan waiver of 6,140 crore rupees. 400 farmers suicide and heart attack, our farmers. This reason, water problem, not rain, total rain failure, and Kaveri water not supply in Karnataka. The farmers are now demanding to constitute the Kaveri Management Board as instructed by the Supreme Court. They largely blame the Karnataka government for not releasing water to Tamil Nadu. Prevailing drought condition and the politics over Kaveri water has left the farmers on a crossroad. Farmers in Tamil Nadu are resorting to desperate measures to seek the attention of the centre and the state government. High-scale protests are a reminder that agrarian crisis is assuming a vast dimension. But on the ground, if you see, the farmers who were expecting an abundant produce are now staring at parched, barren and dry lands. Panchanan Mishra again with the Ground Report. Long stretches of dried banana and coconut plantations, thirsty animals withering in the wind. Small pockets of waterless streams connect the Kaveri River in Tamil Nadu. At this time of the year, almost every village in this southern state wears this look. Shakti is a farmer fighting a lost battle.
He agreed to pay up 30,000 rupees as part of the contract farming for banana, but with his fields thirsting for water, his expectations for a decent income have come crashing down. இதில் விவசாயம் பண்ணோம். நாங்கள் ஆரம்பத்தில் விவசாயம் பண்ணோம், காற்று அடிச்சு தண்ணி இதாயிடுச்சு. இந்த வருஷமும் பார்த்தா போர்லேருந்து தண்ணி வரல, ரொம்ப கஷ்டம். நாங்கள் விவசாயம் பண்ணதுக்கு விலைவாசியும் இல்லாமல் போச்சு, ரொம்ப தாறு நிறையா பழுத்தாளி வேஸ்டாக போச்சு. Another field, another story of drought and despair. Saroj dreamt big for her family while she sowed the black gram seeds. Paucity of water has left her staring at an uncertain future for this year. Like Saroj, thousands of farmers in Tamil Nadu are facing this crunch which could have been avoided. ஒன்றும் வருமானம் இல்லைன்னு ஏதாவது கை செலவுக்கு ஆகும்னு தொலைச்சிருக்கிறோம். என்ன ஒரு 10 மரக்கா காணும், இல்லைன்னா ஒரு 8 மரக்கா வரும். இதுக்கு தண்ணி விடணும், 1 மணி நேரத்துக்கு தண்ணி விட்டாக்க 150 ரூபா கேட்குறாங்க. அந்த தண்ணியை விட்டு அதில் ஏதாவது வாரதை நாங்கள் பயிற்சியில் பண்ணி அறுக்கணும். 7.5 மணலாம் இருக்கு சார், தண்ணி கிடையாது சார், தண்ணி இல்லை, தண்ணி கிடையாதுங்க. These farmers, who are now reduced to the status of farm labourers, are able to sustain themselves only because of Manrega, which has come as a big relief. The state government has increased the number of days from 100 to 150. It's this petty amount which has become the only ray of hope for them. வந்த தண்ணி நின்று போச்சு. கூலி வேலை செய்யறதுக்கு விவசாயி பண்ணாதான் கூலி வேலை பார்க்கலாம், விவசாயியும் கிடையாது. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல எங்களால. 100 நாள் சம்பளம் காசே ஏற மாட்டேது, எதுவுமே இல்ல. குடல்ல அரிசி கொடுத்தாங்க, அதுவும் பச்சை அரிசியா கொடுக்குறாங்க. கை காலெல்லாம் முடிச்சு இழுக்குது. அதை வாங்கி தின்னா வயித்தால போகுது, வாந்தி வருது. It's a double whammy for these farmers. Arid, dry tracts of land, and to top it all, despite many Supreme Court orders, Karnataka is still refusing to supply water to Tamil Nadu. Till how long will Kaveri stare at these barren cultivable land is $1 million question. Kaveri is known to be Ganges of South India and also lifeline for Tamil Nadu. But there is not a single drop of water in Kaveri river up to the far area. And this is the real reason behind the plight of Tamil Nadu farmers. And also one main reason is the forbidden supply of water from Karnataka to the Tamil Nadu. And now the farmers of Tamil Nadu are looking in really very painful situation. In Trishnappalli, with cameraman Junaid, this is Panchanan Mishra for Rajya Sabha TV. From Tamil Nadu, we now take you to Andhra and Telangana, where record red chilli production has led to a crash in prices, in fact, lowest in a decade. The plummeting red chilli prices have given anxious moments to the farmers who are not only bearing the brunt of successive droughts, but also are facing unfavorable market conditions. Aruna Thakur with a ground report from Khammam. It is a summer of discontent for chili farmers in Andhra Pradesh. There has been a drastic fall in the prices of different varieties of red chili this year at the local agricultural market yard, which is said to be the largest chili market in Andhra Pradesh and the country. Consequently, for the small farmers, it's almost a dead end. 30 బస్తాలు తెచ్చినా అందులో 25,000 వస్తే నాకు 35,000 కూలీలకే, మళ్ళీ పెట్టుబడి అదంతా లాసే. చాలా ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి అండి. గవర్నమెంట్ ఎలాంటి సాయం చేయట్లేదు మాకు. It is particularly galling for the farmers if you look at the drastic fall in prices in comparison with last year, which has been in the range of 3,000 to 5,000 rupees a quintal for different varieties. The traders are giving the price regarding quality parameters. We are preparing range report also. The farmers are getting 4,500 to 7,000 between 70% of the produce. Teja, said to be a premium variety, is now fetching 7,000 to 8,000 rupees in comparison with last year's 12,000 to 14,000 rupees. The Byadiga and Devam varieties are fetching 7,000 rupees against 10,000 to 11,000 rupees last year. The prices of some of the inferior varieties have fallen below 5,000 rupees, making it difficult for farmers even to recoup their cost. అధిక ధరలు పెట్టడానికి ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఈరోజు ఖమ్మం చాలా ఉధృతమైన వ్యాపారం నడుస్తూ ఉంది. ఇక్కడ ఒక్క బస్తా కూడా వచ్చిన ప్రతి బస్తా బేరం అయ్యే పరిస్థితి, కింది నుంచి పై రేటు వరకు. ఈ పరిస్థితులు బయట లేకపోయినా ఇక్కడ ఉత్పత్తికి అనుకూలంగా రేట్లు ఇవ్వగలుగుతున్నాం. కాకుంటే పోయిన సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి చూసుకున్నప్పుడు
Meanwhile, the centre has announced a market intervention scheme for chili farmers as a rescue measure by procuring a maximum quantity of 88,300 metric tons of red chili in Andhra Pradesh and 33,700 metric tons in Telangana. India is the world's largest producer of red chilies in the world, where Andhra Pradesh and Telangana are the leading producers, followed by Karnataka, Odisha, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu. Teja varieties of red chili sells like hotcakes in the international market. In fact, just how irresistible Teja is can be gauged from the fact that even China has started knocking on the doors of Guntur to fuel the fire in its belly. But farmers say despite the big demand in the international market, they are paid poorly. Compare last year, this year we purchased more than 50% capacity chili from farmer. Mostly we give them a little more than the market. ఇప్పుడు చైనా ఫ్యాక్టరీలో ఒకటే ఉందండి ముదిగొండలో. అట్లాంటి 4-5 కంపెనీలు ఉంటే కొద్దిగా రైతుకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఒక కంపెనీ కాకపోయినా ఇంకో కంపెనీ కాడికి పోయి అమ్ముకునే శక్తి ఉంటుంది. ఈ ఒక కంపెనీ ఉండటం వల్ల మార్కెట్కి పోతే 4 ఏళ్ళు అడుగుతారు. You can see the farmers have left over the chilies in the farms just because the reason the price the government is offering to them is not even sufficient for them to pay the labourers who helped them in chili picking at the time of harvesting. From Khambam, it's me Aruna Thakur with my camera person team DK Pandey and Ashwani Kumar with camera assistant Deepak for Ground Report. Farmer unions across 20 states are threatening to launch a nationwide agitation. In fact, they are ready with their own list of demands, and perhaps this will get converted into a movement sometimes in the month of June. Leading this movement are the farmers from Tamil Nadu. Arvind Kumar Singh brings you this exclusive report. Plethora of schemes for the farmers, but their miseries seem to be never ending. With 52% farmers almost languishing in the debt trap, farmer suicides on the rise, inability to sell farm produce at minimum support price, the farmers across the nation have decided to join hands and launch a nationwide movement. It's for the first time since 1989 that these diverse unions are coming together under the banner of the All India Coordination Committee of Farmers Movement. There must be the minimum support price and profitable price must be given to the farmers. For that reasons, and interlink of rivers, till that, all the loan borrowed from the nationalized banks, state-owned banks, and the finance company must be write off. The cases loans must be given all farmers. In their meeting held on 21st of May, the farmer unions have chalked out a 5-pronged strategy, starting with making MSP beneficial for the farmers. Every farmer should get the benefit of MSP without the state quota limit. Sugar mills must bear the cost of sugarcane harvesting and transportation. Penal interest on delay in sugarcane payment. Land ownership shouldn't be a criteria for Kisan credit cards. Social security net for elderly farmers by providing pensions. Emphasis on irrigation facilities. Bank and cooperative loans should be waived off. As the Modi government completes its 3 years in power, this platform is gearing up to take the centre by the horns on all pressing agrarian issues. The next meeting is scheduled to be held on 9th of June in New Delhi, in which the future plan of action will be chalked out. देश भर के किसान नेता जो हैं इकट्ठे एक मंच पे आके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं और अपनी लड़ाई साझे रूप से करते हैं, तो उसमें सब आदमी को ताकत मिलेगी, संगठनों को ताकत मिलेगी, हम लोगों को ताकत मिलेगी और सरकार को भी एक फ़ायदा होगा कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी से बात करना आसान रहेगा बनिस्बत के 200 संगठनों से बात करना. A joint farmer movement like this was seen in the year 1989 when it was led by the chief of Indian Farmer Union, Chaudhry Mahendra Singh Tikar. However, the unity ended with differences amongst the union leaders themselves. The AICCFM is planning to launch a 100 days agitation in New Delhi from 21st of June, something that could spell trouble for many state governments. This is Arvind Kumar Singh signing off
for Ground Report. So all eyes would be on how successful this United Farmers platform will be, especially when the Modi government has started talking about doubling the farmers' income by the year 2022. Time for us to slip into a short break. On the other side, we seek answers from the Agriculture Minister, Purshottam Rupala. Back in a moment. Welcome back. You're watching Ground Report, and our today's focus is the distressed Indian farmer. Despite a plethora of schemes, the farmer of India doesn't look happy. Can his problems really be resolved? I spoke to Agriculture Minister Purshottam Rupala. Let's listen into what he had to say. You know, there is an impression that the NDA government is an anti-farmer government. I would just like to understand from you in short that what is the reason for this impression when so many schemes are being launched year after year? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा है। ये जो आप बता रहे हैं कि ऐसी एक भ्रमणा फैलाई जा रही है कि एनडीए की सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है, ये राजकीय हेतु प्रेरित ये प्रचार है। मैं बहुत ही विनम्रता से, और भारत सरकार का मंत्री हूँ, मोदी जी की मंत्रिमंडल का एक हिस्सा हूँ, इसके नाते नहीं मगर एक किसान भी हूँ, तो मैं किसान के नाते कह सकता हूँ कि इस देश को प्रथम ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने किसानों की आय के बारे में खुल के बात किया है। आज तक किसी ने बात नहीं किया है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, कावेरी डेल्टा रीजन को ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन सब किसानों के लिए जो एक बेसिक कॉम्पेंसेशन जो स्टेट गवर्नमेंट का 3 लाख रुपए का है, उसके अलावा इन किसानों को या इन किसानों के परिवारों को कैसे सहायता पहुँचाई जा रही है सरकार की ओर से? सूखा और अकाल की सामना करने के लिए सेंट्रल की ओर से, भारत सरकार की ओर से हर राज्यों को एक स्थायी फंड दिया जाता है। वो निश्चित रूप से अकाल हो या ना हो, उनको स्टेट फंड बोलते हैं, वो इनको दिया जाता है। वो करीबन हमारी भारत सरकार, नरेंद्र भाई वाली सरकार बनने के बाद वो दुगुना कर दिया गया है। कोई भी सरकार हो, इसके पहले जब यूपीए की भी सरकार थी, लोन वेवर्स की बात की जाती थी किसान के लिए, दैट लोन वेवर्स शुड इट बी मेड द ऑर्डर ऑफ द डे और शुड इट नॉट बी अ नॉर्म फॉर द इंडियन फार्मर्स? देखो, मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि हमारा किसान खुद के पाँव पे खड़ा हो, वो खुद ही सक्षम हो अपना बोझ उठाने के लिए, अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए। वो बोझ उठाने के लिए ही सक्षम हो ऐसा नहीं, उनकी लाइफस्टाइल में भी बदलाव हो और अपने बच्चों को और अपने परिवार को ठीक तरह से वो निर्वाह कर सके। तेलंगाना और आंध्रा में अभी देखा गया था कि बहुत सारे जो चिली ग्रोइंग फार्मर्स थे, उन्होंने मिर्च की खेती पूरी अपनी जला दी बिकॉज प्राइसेस पूरी क्रैश कर गई थी। तो ऐसे में उनका ये भी कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट उनकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रही है, लेकिन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट विच यू हैव ऑफर्ड टू द चिली ग्रोइंग फार्मर्स? ये बात सही है कि इस बार आंध्र और तेलंगाना दोनों प्रदेश में चिली का बम्पर क्रॉप होने की वजह से दाम गिर गए थे। चिली एक ऐसी चीज़ है, वो सब्जी है और उसी में आती है, तो उनके प्राइस नहीं होते हैं। वो जो एमएसपी हम तय करते हैं, जैसे एमएसपी तय नहीं है, उनकी एमएसपी तय नहीं होती है, इसलिए इनकी ये प्राइस है ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ की सरकार ने हमको, दोनों सरकारों ने हमको दरखास्त भी दी थी, हमने इनकी प्राइस भी तय कर दी है। ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि किसान जो संगठन है देश के कई कोने से, वो एकजुट होने की तैयारी में लग रहे हैं और शायद जून के फर्स्ट वीक में वो कोई एक नया मोर्चा वो खोलने वाले हैं, ये बोल के कि भाई सरकार और कुछ अपनी वो डिमांड्स रखेंगे सरकार के सामने। तो क्या कुछ ऐसे सिचुएशन के लिए आप की मिनिस्ट्री या सरकार इस समय तैयार है? देखो, हम नियमित रूप से किसान संगठनों के साथ बातचीत करते ही रहते हैं। फिर भी यदि किसान एकत्रित होकर कोई अपनी बात मुखर के कहते हैं, रखते हैं, तो हम जरूर इनके साथ बैठ के भी बात करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने से इनमें से जो भी बिंदु पर अमल हो सके उनके करने के लिए भी हम तैयार हैं।
Taking you away from the agrarian crisis now to the hill town of Shimla, where the tourist influx is increasing because of the turmoil in Jammu and Kashmir. Despite the temperatures going above the normal mark, this picturesque town is becoming the preferred destination of the tourists. Take a look at this report. Volatile situation in Kashmir Valley has become an advantage for the hill state of Shimla. With the intense heat gripping the country, this picturesque town is seeing a flood of tourists who are left with no option but to give the paradise a miss and head to the Queen of Hills. खूबसूरत हो गया है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, टूरिस्ट भी मुझे लग रहा है बहुत सारे आ रहे हैं. ठीक है, फैसिलिटीज़ के नाम पे थोड़ा बहुत ठीक है, पहले से थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, पर जिस हिसाब से क्राउड बढ़ रहा है फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से नहीं है. For the tour operators and local businesses in Shimla, it's a golden opportunity. वो कश्मीर की तरफ जो है टूरिज्म जो है थोड़ा सा कम हो गया है और हिमाचल की तरफ जो है सारा टूरिस्ट जो है एक तरह से मुड़ गया है. थोड़ा पानी की सप्लाई जो समझ में वैसे ही थोड़ी कम रहती है शिमला में, तो इसको जो इम्प्रूव किया जाए. For many tourists though, Shimla experience didn't turn out the way they expected it. Water crisis, poor roads and overpriced hotels are dampening their hill vacation. सड़कों की कुछ हालत मेरे को ठीक नहीं लगी यहाँ पर, और मुझे लगा कि जो यहाँ के होटलियर्स हैं उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत ओवरचार्ज किया है. The number of tourists visiting Shimla in the past few years have seen a steep rise. The number of Indian tourists have increased to over 171 lakh from 146 lakh in 2011. The massive influx of tourists in the Himachali capital is taking a toll on the hill city. The residents battling water and power shortage along with traffic congestion are demanding government to promote rural tourism to divert tourists to nearby towns and villages. शहरों में आबादी बढ़ रही है, पानी, बिजली वगैरह और मूलभूत सुविधाएं उसकी कमी हो रही है. उसको दूर करने के लिए हम एक ठहराव की स्थिति पैदा करें ताकि युवा गांव में रहें, वहां पर रोजगार उनके लिए उपलब्ध करवाए जाएं, वहीं पर वो पर्यटन की दृष्टि से कुछ ना कुछ विकसित करें. शिमला के इर्द गिर्द भी बहुत जगह है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं. अभी हमने जो ये एप्पल पैकेज दिया है एप्पल ब्लॉसम के नाम से, तो इसमें आपका नारकंडा दिया है, हमने थानादार दिया है. तो ये नए एरियाज़ हैं जो अभी टूरिज्म के लिए खुले हैं. तो ना वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, ना ही वहाँ पे कोई पार्किंग की प्रॉब्लम्स है. With tourist footfalls rising every year, it's crucial that other areas are developed and promoted as alternate destinations before the Queen of Hills loses its natural charm. With Bureau Input, Rajat Kane for Ground Report. From Shimla to Jharkhand's Hazaribagh, where a group of students are giving a new meaning to the social service. They've come out with a unique idea of a roti bank which ensures that people do not stay hungry. This social initiative is taking the shape of a movement. Kriti Mishra gets you this ground report. An unusual concept of social service evolving in Jharkhand's Hazaribagh, a place which is known for its abject poverty. Breaking the paradox are these young students of Vinoba Bhave University who have lined up to donate rotis in their lunch boxes to feed the hungry. जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग तो अपनी मम्मी से बनवाते हैं और हम लोग खुद से भी बनाते हैं, और अगर खुद से नहीं बना पाए तो या तो खरीद के लाते हैं या फिर किसी फ्रेंड को बोल देते हैं और वो लोग लाके डोनेट करवा देते हैं. Enthused with the new idea of a roti bank, this duo is making a difference to the society on their own. Mohammad Khalid and Ram Mandaleshwar collect food from various schools, colleges and religious places and serve this to more than 1,000 people each day. इसके लिए हम लोगों ने रोटी में स्कूल के बच्चों से दान लेने के लिए प्राथमिकता दिया, क्योंकि अगर स्कूल के बच्चे शुरू से अगर दान करने के अंदर उनके अंदर ये प्रवृत्ति अगर हम लोग वो डेवलप कर देते हैं, वो विकास कर देते हैं, तो वो बच्चे फिर वो सब समाज सेवा बन जाएंगे. रोटी डोनेट करने से मुझे लगता है कि मेरे पास है तो मेरा रोटी अगर किसी को काम आ जाए, कोई गरीब तड़प रहा है खाने के लिए और हमारे पास है तो कुछ करना चाहिए. This initiative has come as a great respite for the underprivileged. हम गरीब आदमी हैं, हम मेरे पास पैसा नहीं था तो हमको यहाँ पर मेरे और बच्चे को
रोटी बैंक की तरफ से रोटी और बिस्किट मिला हम लोग को खाने के लिए। हमरो मिल रहा है जो रोटी भात जो है से बच्चा घर हमरो मिल रहा है। अब दुख से आया है यहाँ अपन तकलीफ से। The citizens of Hazaribagh, with the help of this roti bank, are aspiring to reach newer heights by including medicines for distribution. The roti bank functions like a bank, but the manner is unique. Here the depositor gets joy of giving and satisfaction, while the withdrawer gets satiated. The endeavour is to expand the service to benefit large number of people. Truly an inspiring tale for one and all. Reporting from Hazaribagh with camera person Shiv Kumar, I'm Kriti Mishra for Rajya Sabha Television. So with this, it's a wrap on this edition of Ground Report. Don't forget to send us your feedback on the email ID flashing on your screen, feedbackgroundreport@gmail.com. If at all you feel that there are issues which are left unaddressed in your area or in your region, RSTV promises to send the cameras. Goodbye and thanks for watching.